Good morning, dear students. Today we will learn about climatic or heat zones. Different regions of the world experience different climatic conditions. There are different parts of the world that experience different climatic conditions. And the areas with similar climatic conditions are grouped into different climatic zones or heat zones. और जो एरिया सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस को एक्सपीरियंस करते हैं उनको एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन में ग्रुप किया जाता है एंड दे आर कॉल्ड हीट जोन्स. व्हाट आर हीट जोन्स? द थ्री डिविजन्स ऑफ द अर्थ बेस्ड ऑन द sunlight received by each region. Based on the heat received from the sun, the earth is divided into three climatic or heat zones. जैसे जैसे सन की जो हीट अर्थ पर पड़ती है उसके अकॉर्डिंग अर्थ इज डिवाइडेड इनटू थ्री हीट जोन्स: द टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजेड जोन. So these are three heat zones of the earth: torrid zone, temperate zone and frigid zone. First is torrid zone, the area between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. You can see this area between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area is known as torrid zone. This region experiences a very hot and humid climate. और इस रीजन में बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है. ह्यूमिडिटी आई हैड टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. दिस जोन इज द हॉटेस्ट ऑफ ऑल द थ्री क्लाइमेटिक जोन एंड टॉरिड जोन इज द हॉटेस्ट. सबसे ज़्यादा गर्म जोन होता है टॉरिड जोन. And because I had told you in the last lecture also, it is near equator. It is also known as equatorial zone. This zone is the hottest of all the three climatic zones as it receives direct rays of the sun throughout the year. और ये सबसे hottest. Why is it hottest of all the three climatic zones? Because it receives direct rays of the sun throughout the year. पूरा साल यहाँ पर डायरेक्ट सन की रेज पड़ती है. सम प्लेसेस इन दिस जोन रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल. और इस जोन में, टॉरिड जोन में, कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है. दिस जोन एक्सपीरियंसेस अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट. सम कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया इंक्लूडिंग द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडोनेशिया, northern part of Australia and a large part of Africa and northern part of South America fall in this heat zone, in torrid zone. Next is temperate zone. Temperate zone extends from the Tropic of Cancer to Arctic Circle in the northern hemisphere and from the Tropic of Capricorn to Antarctic Circle in the southern hemisphere. So torrid zone extends from Arctic Circle to Tropic of Cancer and Antarctic Circle to Tropic of Capricorn. You can see in this picture that it is divided into two parts: northern temperate zone and southern temperate zone. So in northern hemisphere it is from Arctic Circle to Tropic of Cancer and from Antarctic Circle to Tropic of Capricorn. This zone receives slanting rays of the sun and temperate zone receives slanting rays of the sun. It is neither too hot nor too cold. और यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, most countries in Europe and a big part of countries like United States of America, Russia, Australia and New Zealand fall in this heat zone, in temperate zone. So all these countries are in temperate zone.
Next is frigid zone. The area around the poles is known as the frigid zone. जो एरिया पोल्स के पास है अर्थ का, it is called as frigid zone, or it is also known as polar region. In the northern hemisphere, the frigid zone extends from North Pole to Arctic Circle, and in the southern hemisphere, it extends from the South Pole to the Antarctic Circle. So in the northern hemisphere, it is from North Pole to Arctic Circle, and in the southern hemisphere, it is from South Pole to Antarctic Circle. This zone receives extremely slanting rays of the sun, और पोलर रीजन फ्रीजिड जोन जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लांटिंग रेज पड़ती हैं सन की, एज आई हैड टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर ऑल्सो. So that's why this zone is extremely cold and polar region is extremely cold. This zone is covered with snow and the vegetation here is scanty. और ये रीजन पूरा टाइम स्नो से कवर्ड रहता है और यहाँ की जो वेजिटेशन है दैट इज़ वेरी स्कैंटी. स्कैंटी मीन्स वेरी लेस इन अमाउंट. कैनेडा, अलास्का, Scandinavia, Russia, Greenland and Antarctica are located in this zone. All these countries are located in this zone. So that was all about the chapter, dear children. See you in next lecture. Have a wonderful day.